So this is the video recording of 26th of June. हम देखने वाले हैं वो दिन हमने क्या ट्रेड फ्रेम किया और what were the mistakes we made on that particular day. So as we can see on a daily time frame or on a weekly basis, monthly, we are probably having this kind of fair value gaps below. So keeping that bearish perspective in mind, हम यहाँ पे वन डे फेयर वैल्यू गैप से डिलीवर हो रहे हैं फॉर दिस कैंडल्स लो एंड मोर डाउन साइड ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम. Price was delivering from this 4 hour fair value gap. After tapping this daily fair value gap, we still have this liquidity remaining over this particular place. So let's go on hourly time frame and see. So हुआ ये that of course we were on a bearish side, but price ये movement कर दिया without giving us any kind of entry. After that market had only this fair value gap over here and above this one. So the mistake was price has already took this good previous days low, right, और previous days और before that low. तो हम फिर भी सेल्स के लिए देख रहे थे. We should not have done that because price has already took a good kind of liquidity over here and it's moving upside. So as per that हमने यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शॉर्ट एंट्री फ्रेम की. आफ्टर प्राइस tapped this particular level on the 5 minute we had this kind of change. Also we had this fair value gap, right? So we took a short position somewhere over here with keeping our SL above this high and targeting same something like 3 hour or something. तो वो यहाँ तक वर्क किया. हमने हमारा SL ये हाई के ऊपर तक ट्रेल किया एंड इट गॉट स्टॉप्ड आउट. सो दिस वाज एब्सोल्युटली अ मिस्टेक ट्रेड बिकॉज देयर इज़ नो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऑल्सो बिलो. एज वी सी इट हैज़ वेरी क्लीन स्वीप एंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फ्रॉम डाउन साइड. सो आफ्टर दैट मूव आई वॉज हैविंग काइंड ऑफ bearish perspective. Why? Sorry, bullish perspective. Why? Because there was this fair value gap, okay, on a 4 hour time frame unmitigated. So after the sweep I was expecting price to go over there, and also on a particular 30-minute time frame we were delivering from this tiny little fair value gap, okay, over here if you can see. तो मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है प्राइस आफ्टर टैपिंग टू दैट पर्टिकुलर लेवल. एंड ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ था ही, ठीक है. यहाँ पे वी वर ऑलरेडी हैविंग दिस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप टू टारगेट. सो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम इट टुक अ बाय पोजिशन व्हेन द मार्केट हैज़ मेड अ गुड मूवमेंट, राइट, बाय डिलीटिंग ऑल दिस थिंग्स. जब मार्केट ने ये 30 मिनट फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, वी हैड गुड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अबाउट दिस रेड कैंडल, राइट. तो हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ कहीं पे ली विथ कीपिंग आवर एसएल दिस लो. सो हुआ ये दैट हमारा टारगेट तो ये है प्राइम, बट वो यहाँ तक आया तो हमने एग्रेसिवली ट्रेल कर लिया था. स्टॉप लॉस ब्रेक इवन विच गॉट स्टॉप्ड आउट ओवर ईयर. वी यूजुअली डोंट ट्रेल आवर स्टॉप लॉस दैट फास्ट until we are having good market sustaining on a higher levels after entry. So yeah, this could be the probable trade which ended up in break even. So the takeaways from this particular day was like to focus on low resistance and high resistance liquidity runs. You don't have to trade against the high resistance liquidity runs, right? And there is also previous day low taken out. So yeah, that was the thing. This buy was very nice, but we got break even over here, and that's how we were done for the day. That's all about 26th of June